Hello, student, am I audible now? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Fine, Yes, fine, sir. fine. ठीक है. I am sharing my screen again. सर हमारी आवाज आ रही है क्या आपको? हेलो. हाँ हाँ आवाज आ रही है, आप लोगों की भी आ रही है. ठीक है. Okay, I have shared my screen. I hope my screen is visible to all of you. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So see, now here we want to perform splitting based on this character. कोई भी character हो सकता है, कोई भी alphabet हो सकता है, right? So here, if I am using it, wherever we will be having this comma, splitting will take place at those points. तो मैंने यहाँ पे comma use किया इस value में, and if I am using this now, so it will having the same. यहाँ पे आपके splittings के basis पे. हाँ, अगर मैं यहाँ पे use कर दूँ suppose जो s की वैल्यू वो तो सेम ही है. अगर हम स्ट्रिंग की वैल्यू देखें s की वैल्यू सेम ही है. दैट इज दिस, ये वैल्यू है मेरी निमेश कुमार डागुर. वी हैव दिस स्ट्रिंग वैल्यू एंड इफ आई एम यूजिंग स्प्लिटिंग ऑन दिस but instead of this, suppose I am writing m, what will be the output? So now splitting will take place based on this character m, and when you are performing when you are splitting any object, on what basis you are doing it, that will not be the part of your output. So if I am trying to split my string based on m, so this m will not be the part of your content, but splitting will take place wherever you will be having m. तो जहां जहां पे m है वहां से splitting होगी आपकी. तो यहाँ पे जैसे हम मिला स्प्लिट, ये चलता रहेगा. यहाँ पे मिला स्प्लिट, यहाँ पे चला. ओके, इट विल टेक दिस. सो नाउ सी द आउटपुट, यू आर गेटिंग दिस. तीन वैल्यू है दिस, तो जहाँ पे भी एम मिला उस बेसिस पे इसने स्प्लिटिंग कर दिया. सो इट इज splitting is working like this, right? So that we have this is splitting, and तो ये तो हुआ splitting का concept. अगर अब splitting है तो joining भी होना चाहिए, right? तो joining भी होना चाहिए. अगर हम split कर पा रहे हैं, split में हमने क्या किया कि string है, string को split करके जो output मिल रहा है मेरे को list के फॉर्म में मिल रहा है. लेकिन अगर मेरे को join करना हो कि multiple values हो मेरी, उनको join करना हो single कंपाउंड ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, कुछ कंपोनेंट्स को ज्वाइन करके मेरे को कंपाउंड ऑब्जेक्ट में रिप्रेजेंट करना है, देन मींस सपोज आई एम हैविंग वन लिस्ट और डिफरेंट वैल्यूज है इसमें. सपोज आई एम हैविंग डिफरेंट वैल्यूज हियर. सपोज आई एम हैविंग डिफरेंट वैल्यूज. So here, suppose we are having this value. Now I want to join these value. अभी क्या, there are three values. I want to join this as a single value, right? How can we do that? तो we will perform joining. तो अगर मैं एक normal सा case लूँ, joining जब हम कर रहे हैं, whenever we want to join two objects together, obviously there will be there should be some basis of it. या मैं कहूँ एक थोड़ा सा एक एग्जांपल लूँ, we require glue. तो अगर मेरे को दो ऑब्जेक्ट को करना है तो वी रिक्वायर सम फेविकोल काइंड ऑफ थिंग, राइट? ग्लू काइंड ऑफ थिंग. तो मेरे को ग्लू चाहिए जिस बेसिस पे वो कंबाइन होगा. ग्लू के बेसिस पे आपका हम वी कैन कंबाइन टू ऑब्जेक्ट टुगेदर इन द फॉर्म सिंगल ऑब्जेक्ट. सो व्हाट इज दैट ग्लू? तो हियर दैट ग्लू इज सपोज आई एम यूजिंग दिस कॉमा एज ए ग्लू. ये स्पेस भी ले सकते हैं. तो ये काम करेगा एज ए ग्लू. तो जब हम ज्वाइन की बात करते हैं, व्हेन वी आर यूजिंग ज्वाइन, एंड दिस इज आल्सो दिस स्ट्रिंग फंक्शन. तो मैंने यूज किया एस डॉट, सो हियर कोई भी वेरिएबल लिया, हियर वी आर यूजिंग एस डॉट ज्वाइन. तो स्ट्रिंग फंक्शन है तो ज्वाइन मिला मेरे को, एंड सी द आउट. यहाँ हियर सी द पैरामीटर इटरेबल. तो कोई भी इटरेबल आप पास कर सकते हो. यहाँ पे इटरेबल जो मल्टीपल वैल्यूज को कंटेन कर रहा हो, तो यहाँ पे स्ट्रिंग भी पास कर सकते हो, लिस्ट भी पास कर सकते हो, राइट? टपल भी पास कर सकते हो. और मैं चाहता हूँ ज्वाइनिंग के बाद जो वैल्यू आए किसी एक वेरिएबल में जाए. सपोज रिजल्ट वेरिएबल में वैल्यू जानी चाहिए. तो यहाँ पे ये पार्ट तो हो गया ग्लू.
और यहाँ पे जिसको आपको ज्वाइन करना है, जिसके एलिमेंट को ज्वाइन करना है उसका नेम। तो मेरे केस में मैंने लिख दिया नेम, जो कि एक लिस्ट है, एक इटरेबल, राइट। तो ये क्या करेगा, अभी 3 वैल्यूज है डिफरेंट डिफरेंट, हियर वी हैव 3 डिफरेंट वैल्यूज नाउ, बट व्हेन यू आर यूजिंग इट एंड इफ यू चेक योर रिजल्ट, तो यहाँ पे वैल्यूज कंबाइन होगी इन द फॉर्म ऑफ ए सिंगल वैल्यू। अभी एक सिंगल वैल्यू है, एक सिंगल स्ट्रिंग है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं रिजल्ट, what will be the output? Can you tell me? Just tell me what will be the output of this? सर ए। चेक करते हैं। 0 1 2 3 4 5 7 8। 8 पे क्या है? 8 पे क्या है? दिस इज कॉमा, क्योंकि ये सारे करेक्टर इसका वैल्यू है, एक सिंगल स्ट्रिंग है ये, राइट। सो यू विल बी गेटिंग कॉमा बिकॉज इफ यू चेक द टाइप ऑफ दिस रिजल्ट, इट इज ऑफ किस टाइप का है ये? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग, राइट। आर यू गेटिंग? तो ये इट इज वर्किंग एज ए ग्लू हियर। ये है इसकी यहाँ पे ग्लू। अगर मैं इसकी जगह कुछ और कर दूं यहाँ पे, सपोज इफ आई एम यूजिंग दिस हैश, so my glue is this now, and if I'm using the same names पे मैं अप्लाई कर रहा हूं, तो क्या आउटपुट आएगा? हाँ जी, रिजल्ट का कैस का तो सेम ही रहेगा। तो रिजल्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ रिजल्ट? बताइए। तो ये जो इसकी मल्टीपल वैल्यूज है इनको कंबाइन करेगा एक सिंगल वैल्यू के बेसिस पे, राइट। इट विल कंबाइन दिस एज ए सिंगल वैल्यू and represent that, display that here. Are you getting the things now? ओके सर। कोमा और की ये जगह कोई हैश डालेगा। हाँ, और कोई भी इटरेबल हो, इटरेबल कुछ भी हो सकता है, कि स्ट्रिंग भी हो सकती है। सपोज मैं डायरेक्टली स्ट्रिंग लिख देता हूँ यहाँ पे, आई हैव रिटर्न सीडैक। अब मैंने एक स्ट्रिंग ही लिखा, मैंने वो नहीं लिया, लिस्ट नहीं लिया। इट इज आल्सो इटरेबल बिकॉज इट इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। यहाँ पे इटरेशन होगा कैरेक्टर के बेसिस पे, यहाँ पे इटरेशन हो रहा था इन वैल्यूज के बेसिस पे। तो अब कैन यू टेल मी व्हाट विल बी दैट? सो इट विल कंबाइन, तो ये भी मल्टीपल है, उसको सिंगल के बेस पे करेगा। बट ग्लू, व्हाट इज ग्लू हियर इन अवर केस राइट नाउ? दिस, उसी को यूज कर लेते हैं। चलो, तो क्या आउटपुट आना चाहिए? सीडैक हैश, सीडैक हैश। सीडैक अगर हम पूरे को कंसीडर कर लेंगे, क्या हम इसको इटरेबल C कहेंगे? has D has A has C. It's a collection of character. It's a string. It's a collection of character. In the case of list, it's a collection of these. Right? तो जिनका कलेक्शंस है उन वैल्यू को इंडिविजुअली ट्रीट करें, तो इंडिविजुअल वैल्यू करेक्टर्स हैं इसके, जो इंडेक्सेस है। तो सी अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ, द आउटपुट विल बी दिस, सी हैश, डी हैश, ए हैश, दैट्स इट। ग्लू ही चाहिए था तो ग्लू नहीं। आर यू गेटिंग दिस थिंग नाउ? आई होप यू आर गेटिंग इट नाउ। यस सर। Yes, sir. ओके। अब सपोज मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, आई एम यूजिंग वन मोर थिंग। सपोज ग्लू तो है, बट कंबाइन करने के लिए कुछ भी नहीं है। कंबाइन करने के लिए कुछ भी नहीं है। अब क्या होगा बताइए, क्या आउटपुट आएगा? खाली ग्लू है, कंबाइन करने के लिए कुछ नहीं है, तो क्या आएगा? कुछ है उसका कोई मीनिंग? हैश। खाली ग्लू का कोई मीनिंग है जॉइनिंग में? एम्प्टी। जब कुछ है ही नहीं तो क्या फायदा? सी, तो इसीलिए दैट इज व्हाई वी आर गेटिंग एम्प्टी। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. अब इस केस में सपोज इफ आई एम यूजिंग ए, केवल एक करेक्टर है, केवल एक करेक्टर है। तो एक, अगर मेरे पास सिंगल एक ही ऑब्जेक्ट है और मैं ग्लू भी करूंगा, तो क्या उसका कोई बेनिफिट है सिंगल के साथ? ज्वाइन का कोई मीनिंग है सिंगल का? No, sir. अगर सिंगल है तो ज्वाइन का तो कोई मतलब ही No, नहीं है। sir. एटलीस्ट वी शुड हैव टू। तो अगर मैं इसको यूज करूं तो क्या आउटपुट आएगा? व्हाट डू यू थिंक? The A. बिल्कुल, इट विल बी ए। तो कुछ मीनिंग नहीं है। हाँ, अगर मैं इसको कुछ ऐसा कर दूं, स्पेस दे दिया, स्पेस भी एक करेक्टर है, या चलो स्पेस की जगह थोड़ा डिस्प्ले में प्रॉपर रहे, ए कर लेते हैं। अब ए हाँ हैश जी, ए। बिल्कुल ठीक है। चेक इट। सो आई होप यू आर गेटिंग इट। तो सिंपली लॉजिकल वे में ये चीजें मेरी काम करते हैं। आर यू गेटिंग दिस थिंग नाउ?
Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now we will take a break and we will continue our session after break. You can take a short break and we will continue. It's 11:18 right now, my mobiles. So we will continue at 11:30. Till then you can have a break. ठीक है? तो 11:30 पे फिर से continue करेंगे session को. Thank you, sir. Thank you, sir.
Okay, students, I'm back. So should we continue our session now? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so here I am sharing my screen first. So I have shared my screen. I hope my screen is visible to all of you. Yes, sir. Visible. Okay, so before that, I will copy this code in our text file so that you can use this for your reference further. Okay, so now next we will be discussing about control flow structures. As we mentioned, we can divide these control flow structures in two categories. Mainly, we have selection structure. First structure is selection structure. It is also known as decision-making structures. And popularly, we use another terms, conditional structures. Already you know that in real time there are various scenarios where we want to perform only specific operation based on specific condition, and to implement this in Python programming we use the concept of if, elif, else, and already we have taken this. तो ये हम already discuss कर चुके, right? If elif else का case, if we recall this. So already we have discussed this. So we can implement like this. Means if we can specify one condition, and what will happen if one condition true or false. For false, we are using else block, right? And if you want to deal with multiple conditions, then we can use elif for that. So already we have taken this. Now come to the second type of structure. It is known as iterative structure, which is popularly known as looping. So now we will be discussing about this structure now. So when in Python programming, we can use this iterative structure by using two types of loop, two types of structure, while loop and for loop. So here, so see, and so whenever we have such type of requirement where we want to repeat some section of code, then we can use looping. And this repetition can be based on condition, or it can be that how many number of times you want to repeat it, right? Based on defined number of iteration, number of repetitive steps. So that is why we have these two types of variation of it, looping. So whenever you want to perform the same operation multiple times, you will be using looping. So we have while loop, for loop. In the case of while loop, your repetition will be based on condition, right? So it will use to repeat a statement of group of a statement, means your line of code, which you have defined, which we have used to define functionality while a given condition is true, right? So it tests the condition before executing the loop body. So based on condition, repetition will take place. This is the syntax of while loop. So we have while, and here you will be writing expression to specify your condition that can be related to true or false. So if it is true, only then it will enter here. And here
from the syntax point of view, we have colon, and after that, whatever lines of code you will be writing for while loop, these lines should be written having one tab space. जब भी colon है तो वो space को maintain करना है, so that ये block of code properly define हो सके while loop के लिए. So if this expression is true, it will enter here, और जो भी line of code है वो repeat होंगे, and these lines will be repeated until this condition is false. ये केवल तभी stop होगा आपका loop when this expression will be false. अगर आपका expression हमेशा true है, if your expression will always be true, then this loop will go on forever. एक infinite loop बन जाएगा, which should be avoided. उस तरह की condition हमें avoid करनी है. Here you can see the flow chart of the same. So while के case में first of all condition will be checked, and if it is true, it will enter into the loop and operation will be performed. और ये operation तब तक आपके perform होते रहेंगे जब तक कि आपकी condition false नहीं होती. Whenever condition will be false, your loop will be stopped, right? And whenever we are discussing about loop, actually there are three things with the loop. There are three things with the loop, and these are initialization, condition, and change. That change can be incremental, or it can be decremental. So obviously, whenever you want to start a loop, you will be using some initial value. So initialization is required. After that, based on condition, your loop will be executed. Your loop will be started. It will work in the similar way, depending on your code. कि जिस functionality को आपको define करना है, you will be writing your code accordingly. So based on your code, if condition is true, your repetition will take place. And obviously, when we are performing our operation, जब loop मेरा चला, while our loop is going on, so obviously we want that value should be changed. Mostly, in most of the cases, value will be changed. Actually, it can be increment or it can be a decrement of the value, right? So ये change किसी भी तरह का हो सकता है, increment or decrement depends on our requirement. हम उस loop को use करेंगे, और जो भी increment decrement use करें means whatever change of value is taking place, once again उस change के against आपकी condition check होगी. अगर true है तो फिर से चलेगा loop, और ये loop तब तक चलता रहेगा जब तक कि condition आपकी false नहीं हो जाती, right? So I'll be taking one example of it so that it can be more clear to you. तो while loop का एक हम यहाँ पे example लेके चलते हैं. Suppose तो इसके लिए आई एम यूजिंग स्क्रिप्ट, यहाँ पे स्क्रिप्ट लेते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, कोड तो सेव कर ही चुके हैं ये. सो आई एम गोइंग टू टेक द केस ऑफ while loop. Suppose I am having one requirement that my requirement is this. I want to print 10 values. सिंपल सा केस ले रहे हैं. I want to print 10 values from 1 to 10. ये 10 मेरा इंक्लूड होना चाहिए, ये इंक्लूसिव होना, ये इंक्लूड होना चाहिए मेरा आउटपुट में, शुड बी इंक्लूसिव. सो दैट आई वांट टू प्रिंट. सो सीधा सिंटेक्स, तो 1 से स्टार्ट करना है तो मैं क्या करता हूँ, starting 1 and the सर आपका आवाज कट रहा है. सर वॉइस ब्रेक हो रही है. सर आपका कनेक्शन लूज हो रहा है. and condition should be condition. सर कोई टेक्स्ट मैसेज करो जो सर को दिखेगा. सर वॉइस ब्रेक हो रहा है.
हेलो 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 Is Sir still in the meeting? सर का व्हाट्सएप पे मैसेज आया है। अपना अपना व्हाट्सएप चेक कर लीजिए। वेट करने के लिए बोला है सर। एक इस पे प्रैक्टिस करना है जो मैम ने दिया है। कि मैम एसक्यूएल का दे रही है और हम लोग का पाइथन चालू है।
Okay, students, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, fine. sir. So now we are continuing Yes. our session now. I'm sharing my screen first. Okay, so we were discussing about this while loop. So here you will specify while. So initialization, I have initialized it with 1 as per the requirement. After that, you will specify the expression as per your condition. So here I have written some expression here. After that, colon, and see after colon when you will press enter, as we are working with ideally, so automatically cursor वहीं पे जहाँ पे इसको होना चाहिए. If you are writing your code in a script in any notepad file, here you need to press one tab key. Means we should have 4 cursor space, and then from here you will start to write down your code that you want to specify for this loop. So here in this case, I just want to print the value. So I'm just printing and printing the value of I. And after that, every time I want to increment this value by 1 because I want to get value 1, 2, 3, 4 up to 10, right? So here we can write the expression for that. So I have written I equals to I plus 1 because I want to increment the existing value of I by 1 every time. And after that, we adjust. So here you can see. So what will be the output? See, it will start from this 1, and here it will check against this 1 less than 11. The condition is true. It will enter here. It will print 1. After that, it will be 2. So here with 2, again it will check with this 2 less than 11. Condition true. Once again it will enter here, print 2. And after that, when it will come to this line, it will be 3. So with 3, condition true, it will come here. It will print that. And after it will be incremented by 1. So in this way, it will continue. Suppose my value is 9. So 9, after 9, it will be 10. For 10 also it is true. It will print 10. After printing 10, it will be 11. And for 11 less than 11, condition is false. So at that time, your loop will be stopped, right? So it is working like that. This loop is working like that. And see if I'm executing it now. Suppose I'm storing it while loop dot py. I'm giving this name to my loop and storing it at one location. So see, values are being printed from 1 to 10 like this. So in this way, you can use while loop. Now come to the another loop, that is for loop. Suppose, okay. So first of all, come to the syntax part of this for loop. So here also we have this example. So it is working like this. And here you can see there is one more option. When we are writing this statement, so here we are specifying what will happen if condition is true. Even if you want to specify what will happen if condition is false. So you can use optionally, it is optional. You can use else also with that. So whatever code you will write in else, whenever this will be false, it will come to that. So it is optional. It is optional. And obviously when your loop will be completely stopped, and if you have written some lines of code after that, it will follow those lines. So here also, this is one alternative case that if condition is true, it will print that kind of thing. And whenever condition will be false, it will come to the else block, and whatever you have defined in else block, it will be working. See the code initialization with 0, 0 less than 5, true. So it will display 0 is less than 5. After that, it will be 1 with 1. Once again, it will check 1 less than 5, true. 1 is less than 5, 2, 3, 4, 5. Suppose this value will be 4. After 4, it will come here. So it will be 5. When it will be 5, so it will check with this. While 5 less than 5, condition is false. When it will false, it will come to the else and it will display 5 is not less than 5. So this you will be getting this output. So this and this part is not mandatory with while even you can use else with for loop also. That we are going to explain next. So this is for loop. So basically the syntax of for loop is a little bit different when we are comparing it with other languages for loop. Actually in other languages like Java or C#, we have for each. So it is similar to that. So before that, I would like to discuss one more thing. It's just like that. Suppose, okay, is there is there anyone here who have worked with any database? Koi bhi database. How many of you have worked with databases? Or I should ask, how many of you have not worked with any of the databases?
किसी भी डेटाबेस पे काम नहीं किया इससे पहले, चाहे वो MySQL, SQL सर्वर, Oracle, एक्सेस कुछ भी अच्छा नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, डोंट वरी, हम अपने सेशन में भी डेटाबेस कनेक्टिविटी का भी सेशन लेंगे, उस समय मैं डेटाबेस का भी एक ओवरव्यू लूंगा, देन यू विल बी फैमिलियर विद द डेटाबेस कॉन्सेप्ट। चलिए ठीक है, फिर अभी एक चीज मेंशन करते हैं यहाँ पे, बट एज सम ऑफ यू हैव नॉट वर्क विद डेटाबेस, तो मैं थोड़ा डिफरेंट वे में इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सो बेसिकली the syntax is just like that कि suppose मेरा एक डेटाबेस है, यू कैन कंसीडर एक डेटा सोर्स है जहाँ पे फ्रॉम वेयर वी विल बी गेटिंग वैल्यू, हमारे केस में सोर्स लिस्ट टपल कुछ भी हो सकता है। सो एक डेटा सोर्स है, एक डेटाबेस है, एंड यू आर एक्सेसिंग द वैल्यू, so you are accessing the value, so basically what we do when we are accessing the value, we can put this value in some temporary memory area। जनरली हम क्या करते हैं, ये कर्सर कॉन्सेप्ट होता है डेटाबेस का। इन कर्सर कॉन्सेप्ट में क्या, कर्सर क्या होता है, बेसिकली इट इज अ टेम्पररी मेमोरी एरिया वेयर यू कैन स्टोर वैल्यू। सो व्हेन वी आर एक्सेसिंग सम वैल्यू फ्रॉम डेटाबेस, so we can, whatever value will be retrieved from database, we can put those values in one temporary memory area, and that temporary memory in database concept is known as cursor। if you are not familiar with that, it's not a problem। so basically एक data source लिया हमने, data source से we are getting the values। suppose यहाँ पे कुछ records है, we have multiple records, we have multiple values। so after that, so whatever, so एक temporary memory area में value आ गई, and after that we can store these values in some variables। तो one by one हम किसी variable के अंदर इन value को fetch कर सकते हैं। we can fetch these values in some variable, it can be one variable, it can be more than one variable। so the syntax of for loop is considering that kind of scenario। if you look at the syntax of for loop, it is just like that। for we can specify like this, suppose a data source from where we will be getting the values, it can be a list, it can be tuple, it can be any other data source, and the syntax will be like this, for, and when you are fetching the value from data source, it will be one by one, and whenever values are coming, obviously it requires some variable to hold it। जब वैल्यू रिटर्न करके आ रही है तो उसको होल्ड करने के लिए कोई वेरिएबल भी चाहिए। सो यहाँ पे हम यहाँ पे करेंगे फॉर, तो सिंटैक्स भी कुछ ऐसा ही होगा। एक्चुअली सिंटैक्स कैसे आया पिक्चर में, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट। सो फॉर, after that we will be writing iterating variable। I am calling it's a variable, simply I am calling iterating variable because I am iterating through the values of it। I am going through the values of, I am going through the values of this data source, and after that from syntax point of view you will be using in, after that colon, and then you can write after one tab space, you can write down the line of code as per the functionality। So this is the syntax part। So basically what will happen, whenever values are coming one by one, we are storing in this value into this variable, and after that once we are having value in this variable, we can perform any kind of manipulation as per our requirement by writing code accordingly। So this is the syntax part of it। Now suppose I want to do the same thing, I want to print 10 values from 1 to 10, but by using for loop now। But before discussing about this for loop, I would like to discuss one more function which is known as range function। Before that, I would like to mention one function, that is range function। Basically, range function will give you the value based on some range, and there are various variation of it। If you are passing only one parameter with it, it will return you the 10 values started from 0, and if it is being started from 0, so what will be the last value? What should be the last value here? 9. It will be 9. So it will return 10 value started from 0 to 9. So less than 1 hogi. So here we are getting value, but when we are talking about range, suppose that I want to define the range. When we are talking about range, there should be some minimum value and there should be some maximum value. So you have various variation of this function। We can pass one parameter or we can pass 2 parameter, even we can pass 3 parameter also। So if you want to define the range by your own, suppose मेरे को 5 से 15 तक लेना है, तो I will be writing 5, 15 को अगर include करना है तो ये value 16 होनी चाहिए। So if you have written this,
output will be 5, 6, 7, 8. Similarly, it will take the value up to 14, 15. So that will be the last value. So it will take value continuously. Right? Last value will be 15. And if you want to get the value having some interval, right? If you want to get the value having some interval, then so for that purpose we can use 3 parameter with it. So here we can specify a range, and suppose I have written 1 to 20, and here I have written some. So having interval of 2. So if you are having interval of 2, you will be getting the value at this interval. तो क्या आउटपुट होगा इस केस में? क्या आउटपुट होगा? 1, 3, 5, 7, 9 up to 19. Up to 19. up to 19 आएगा? हाँ सर आएगा. बिल्कुल आएगा. So up to 19 it will take that, right? So values will be like this as per this range. So now with this we will proceed further. So here I want to do the same thing but with for loop now. तो मैं काम करता हूँ इसको तो कमेंट कर देता हूँ. एक तरीका तो ये कि आप सारी लाइन को कमेंट कर दें कि आप 1 by 1 हर एक लाइन को कमेंट करें. एक और तरीका अगर मेरे को ये आपने आउटपुट में नहीं कंसीडर करना तो हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली कमेंट नहीं है बट इट कैन वर्क लाइक कमेंट. क्योंकि लेकिन अगर हम देखें तो एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करते हैं बट मैं प्रिंट नहीं कर रहा तो ये यहाँ पे रहता है, प्रोसेस होगा लेकिन डिस्प्ले नहीं होगा. तो वर्किंग लाइक कमेंट बट एक्चुअली इट इज नॉट ए कमेंट. ये इग्नोर नहीं होता, ये एक स्ट्रिंग की तरह ट्रीट हो रहा है. तो ये डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि मैं केवल फॉर लूप का आउटपुट दिखाना चाहता हूँ. तो फॉर लूप का केस ले रहे हैं हम यहाँ पे एंड आई वांट टू डू द सेम थिंग. टास्क यही करना है. तो आई विल राइट लाइक दिस फॉर कोई भी इटरेटिव वेरिएबल जो होल्ड करेगा वैल्यू, और वैल्यू कहाँ से आ रही है? इन. मैंने स्पेसिफाई किया रेंज फंक्शन यूज कर लिया एंड हियर 1 to 10 लेना है. तो बाय डिफॉल्ट तो अगर मैं एक पैरामीटर करूँ तो 0 से लेता बट मेरे को तो 1 से लेना है तो 1 और सर वॉइस ब्रेक हो रही है. 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 टेक्स्ट मैसेज करो तो. वॉइस ब्रेक हो रही सर. तो 10 को इंक्लूड करना आउटपुट में. 10 लिख दूंगा तो 1 to 9 लेता बस. कॉल है एंड द tab space here. So in I'm just writing the code just to print the values. तो यहाँ पे ये वैल्यू अपने ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होके 1 2 3 ये प्रिंट करेगा. सी इफ आई एम एग्जीक्यूटिंग इट नाउ, so here it is showing 10 values. It is showing 10 value 1 to 10, right? So सेम आउटपुट है. अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो मेरा आउटपुट आ रहा है ना, इट इज प्रिंटिंग वर्टिकली, मींस एवरी टाइम वी आर हैविंग लाइन ब्रेक. क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये जो है ना, बाय डिफॉल्ट स्लैश एन यूज कर रहा होता है. स्लैश एन बताया था ना लाइन ब्रेक के लिए, तो ये बाय डिफॉल्ट प्रिंट जब हम यूज करें ना स्लैश एन को यूज करता है. लेकिन मेरे को क्या है कि मेरे को आउटपुट ऐसे नहीं दिखाना, मेरे को वर्टिकली नहीं दिखाना. आई वांट टू प्रिंट दिस वैल्यू इन द सेम लाइन. तो हाउ कैन यू डू दैट? So for that purpose we use one attribute with print that is known as. सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है. स्पेस, अगर स्पेस देना है आपको तो स्पेस. हाँ जी, अभी ऑडिबल हूँ? एम आई ऑडिबल? सर बीच बीच में ब्रेक हो रही है. स्टूडेंट्स एम आई ऑडिबल? अच्छा अभी आ रही है. योर वॉइस ब्रेक हो रहा है बार बार. सर ब्रेक हो रहा है बार बार. ना कुछ कनेक्टिविटी इशू चल रहा है, पता नहीं क्या है प्रॉब्लम. चलिए कंटिन्यू करें. इफ आई एम ऑडिबल टू यू प्रॉपर्ली. Yes sir. Yes student, should we continue? Yes sir. अच्छा Yes sir. क्या है वैसे, चलो जब तक चल रहा है. तो सर okay, no problem. So yeah, see if I am using this attribute now, if I am executing it, so see values are being printed in the same line. और यहाँ पे स्पेस दिया तो उतना ही स्पेस यहाँ पे आएगा.
नहीं देंगे तो फिर ये एक साथ आ जाएगी वैल्यू. So you can print the value in vertically, horizontally also in this. Means you can print your output in the same line by using this. तो उससे जो ये बाय डिफॉल्ट जो इफेक्ट होता है ना स्लैश एन का प्रिंट के साथ, उसको ये आपका ओवरराइड कर देता है. सो हियर वी हैव दिस. अब अगर इंटरवल पे मेरे को वैल्यू करनी होती, जैसे अगर रेंज का मैं यहाँ पे एक केस देखूं, if I am writing like suppose if I am writing 2 here, then क्या आउटपुट आएगा? तो it will display the value from started from this index up to this one having interval 2, right? So see the output now. So output will be like this 1 3 5 7 9. So we are getting this. Even right now our loop is being executed in forward direction. अभी वैल्यू जो है लोअर से अपर की तरफ जा रहे हैं. व्हाट अबाउट इफ यू वांट टू डिस्प्ले द वैल्यू इन बैकवर्ड डायरेक्शन? मेरे को 10 to 1 प्रिंट करना है सपोज, ये तो 1 to 10 है. अगर मेरे को प्रिंट करना है वैल्यूज को इन बैकवर्ड डायरेक्शन मींस 10 to 1 प्रिंट करना है. देन तो अब इसका केस लेते हैं. 10 0 minus 1. एक्सक्यूज मी, हेलो. 2 मिनट बात कर लूं? Yes sir, we can put 10 0 and minus 1, right? हाँ, 1 मिनट रुकिएगा स्टूडेंट्स, 1 मिनट. Anshuman, are you there in the class? Anshuman, are you in the class? Okay, no. Dipanshu, are you in the class? Are you there? Dipanshu, okay. अंशुमन और दीपांशु दोनों नहीं है, ठीक है? ओके. अंशुमन दीपांशु एक बच्चा है. अच्छा, एक ही है. ओके ओके. अंशुमन दीपांशु है, बट ये जनरली शायद आता. Seetal, are you in the class? Actually, these are students of PGT BDA. Seetal, are you there? Okay, Seetal is not. Yeah, sir. Yeah, sir. Okay, fine. अखिल कुशवाहा. Akhil Kushwaha. हाँ सर. Okay, Akhil Kushwaha is in the class. शोभित श्रीवास्तव. Shobhit Srivastav, are you there in the class? Okay, no. Ambuj Singh. Yes sir. Okay, ठीक है. मनन जैन तो नहीं होगा, है ना? मनन जैन नहीं है. हाँ. शुभम गुप्ता. Yes sir. Okay. वेदांत बलिराम भारत. Redant. Yes sir. Yes. Medant, okay, ठीक है. रविकांत. Yes sir. Okay, ठीक है. लोकेश सिंह. Yes sir. Okay. अभिषेक पांडे. Yes sir. Okay. अनुष्का सिंह. Yes, sir. Okay, ठीक है. हिमांशु गुप्ता. हिमांशु गुप्ता is not in the class. Okay. And विवेक राठौड़. विवेक राठौड़. Okay, नहीं है. ठीक है. बिल्कुल भी नहीं होता है क्या? पूछना एक बार. बच्चों को ही पूछ लेना. विवेक राठौड़ आए थे कभी सेशन में स्टूडेंट्स? If you have noticed. Yes sir, आया था वो. हाँ मैम आए हैं. बाकी मैं भी हाँ अटेंडेंस से चेक कर लूंगा. हाँ नेक्स्ट क्या मैम? गणेश यादव. Yes sir. ओके ठीक है. प्रियांशु. अवेलेबल सर. ओके ठीक है. थैंक यू. वेलकम. ओके कंटिन्यू करते हैं.
So if you want to print the value in backward direction, means upper to lower पे हमें अगर print करना है, so for that purpose also we can make use of this range function and our code will be like this. और अभी मैं I don't want to display the output of this, तो इसको भी मैं same एक रो स्ट्रिंग की तरह ट्रीट कर लेता हूँ. So here, so we can write like this for I in range. So now if you want to move from upper to lower, so you will specify upper value here, and you want to go to the lower, and it will be less than 1 from the second parameter, and I want to include 1 in the output, so I can write 0. And after that, if we are moving in backward direction, you will be using third, and here you will put -1. So here minus is working that you are going to work with backward direction. You are going to print the value in backward direction. So now we want to print these values. So we can just issue print I, and if we are executing it now, see the values are being printed from 10 to 1. If you want to do the same thing in the same line, so same thing you can use that I mentioned. I am using some space also here, and if you are printing it now, it will output will be same, means value will be same, but this value will be displayed to you horizontally, as you can see here. Okay. So in this way you can work with the loop, this while loop and for loop, right? Now we will have look at our PPT so that we can check कोई fact छूटा तो नहीं रह गया. Okay, so right now now come to the loop. Now we will be using our types as a data source. तो अभी तो to specify the values I have make use of range. ज़्यादातर हम for loop के साथ काफी use करते हैं range function को, but in real time we will be dealing with our types. Just wait for a minute. Just wait for a minute, students. Okay, I'm back. So here even see here I'm using string as a data source. So string, as we know, it is a collection of character. So when you are using the same statement here for some variable name, it is variable name. You can write any name here for variable in Python. So what will happen? Here iteration will take place character by character. When we are trying to iterate through the values of character, so first of all it will go to the first character from this string. Means basically what is happening? When you are trying to iterate the value from some data, so it will check is there any value in data source? Yes, we have one character P, so it will take that and print with this message current letter P, right? After that will check is there any other value available. In the case of string, value is character, so it will check is there any other character? Yes, available. It will take that and print that. After that, once again it will check is there any other character? Yes, available. It will take print that. After that it will is there any other? Yes, it is there, so it will take that. After that also we have, so it will take that. After that also we have and it will take that. After that it will check is there any other character available? No, there is no more character. Whenever there will be no more character, whenever there will be no more character, means in this scenario if there is no more value to fetch, your loop will be stopped. So here also when there is no more character to fetch, it will be stopped and print the output. So your output will be printed. So same operation is being repeated unless we are having
any character. अगर कोई character नहीं है, if there is no more character to fetch, then your loop will be stopped actually. So it is working like this. This data source can be a finite type. So in this case, in this example, see, our data source is list. Now I want to iterate through the values of list. Suppose here I have defined one list named fruits. This list is containing 3 values at index 0, 1, 2. So you have both the options. When you want to iterate through, when you want to traverse through the values of a list, when you want to iterate through the values of a list, you have both the option. You can, even with the string also we have that. You can iterate through the values directly, or you can access the value. You can iterate through the values by using index. तो अभी मैं पहले वाला सिनेरियो ले रहा हूँ where I am iterating through the values directly, और directly value को ही मैं print करा रहा हूँ. So here see how it is working. So here I am trying to iterate the values और उनको store कराने के लिए यहाँ पे एक iterating variable define कर लिया हमने. I have given one name fruit to this, and values will be iterated from this fruits. Value will be coming from this list. So when your loop will be started, it will check is there any value available here in fruits? Yes, it is available. It will take that and print with this message current fruit banana. After that, once again it will check is there any other value? Is there any other value available? Yes, available. It will take that, print that as per this functionality. After that, is there any value available? Yes, available. It will take that, print that. Once again it will check is there any other value? No, there is no more value after mango, so it will just stop. This loop will be stopped and print the values. So it is working like this. Now, what about if you want to access the value based on index? So you can use that also. And next, I'm going to take that part. And here your range will help you. So see here, I want to. So here I'm having a list, and I want to take through the values by using the concept of index. Index के basis पे मेरे को करना है. तो see क्या किया हमने? For I in range और lan a लिखा है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता. lan a का मतलब क्या है यहाँ पे? What is the meaning of lan a? क्या आउटपुट आएगा lan a का? A is a list. 4, like the length of the list. Yes, it's 4. It's length of a, that is number of elements of a, and this is 4. So directly range 4 भी लिख सकते थे. This is just another way to do the same. तो range 4 का मतलब क्या है? ये हो जाएगा आपका range 4. Range 4 का मतलब क्या है? तो कौन कौन सी वैल्यू आपकी फैच होंगी रेंज 4 के अकॉर्डिंग? 0, 1, 2, 3. Range 4 means we have 0, it means you will be having the range 4 means you will be having this 4 value from 0 to C. So see, first of all, how it will work. First of all, range 4, when we are using this range 4, it will take, first of all, it will take 0. So when it will take this 0 here in I, the statement will be, और ये 2.7 है इसलिए parenthesis नहीं लगा. Python 3 में ना इन सबके साथ parenthesis लगाना print के साथ. यहाँ पे सबके साथ parenthesis लगाएंगे. ये ध्यान रखिएगा. So here print parenthesis you can use, and after that see what I will do. So 0 will come here. Okay, it will check is there any value available? Yes, available 0. It will take that. When it will take that, the expression will be 0, and it will be concatenated with A0. And what is A0? A is a list. And we are using index 0. So what is A0? What will be the output of this? A0 means the value at index 0 of this A. And A is this. So the index 0 we have welcome. So it will display 0 welcome. 0 because of this we are printing this also 0 welcome. So ये value तो होगी मेरी exhaust. Now it will check is there any value available? Yes, available 1. It will take 1 and the expression will be 1 and A1. A1 means that value at index 1 of this A, that is in. So it will display 1 in. अब ये value भी exhaust हो गई.
After it will check is there any value available? Yes, available 2. It will take that 2A2. A2 means Noida. So A2, sorry, CDAC 012 CDAC we have. This value is exhausted. After that, it will take 3 and it will display 3 A3. A3 means 0123. That is Noida. So it will take that. ये value भी exhaust होगी. Now there is no more value to fetch. So this loop will be stopped and it will print the output accordingly. Right? So it is working like this. तो index के basis पे भी आप कर सकते हैं. ये scenario आप string के साथ भी use कर सकते हैं, tuple या और types के साथ भी use कर सकते हैं. Further dictionary और set पे भी आएंगे, उनके भी जब हम उनको explain कर लेंगे, उनकी भी fetching देखेंगे. So here, in this way you can use for loop. Like even you can make use of these also, range with this also. Index के basis पे कर सकते हैं, while के through भी कर सकते हैं, for loop. ये एक दूसरे के variation ही actually. Is your choice कि क्या use करना है. अभी क्या है कि whatever loop we are using, whenever any loop is started, उसके बाद continuously as per expression is taking the values. लेकिन और ये लूप तब तक चलता रहता है जब तक कि while के केस में कंडीशन फॉल्स ना हो जाए या फॉर लूप के केस में आपकी वो एग्जॉस्ट ना हो जाए सारी वैल्यू, राइट. तो लेकिन अगर मेरे को इन रियल टाइम इट मे बी द सिनेरियो कि मेरे को जब ये प्रोसेस चल रहा है उस एग्जिट कंडीशन से पहले ही अगर मेरे को एग्जिट करना है, मतलब यहाँ पे सारी वैल्यू के थ्रू इटरेट ना करे, पहले ही अगर कोई कंडीशन मिल जाए तो आई वांट टू जस्ट कम आउट फ्रॉम द लूप, राइट. और समटाइम इट मे बी द केस कि जब मैं ये एग्जीक्यूट हो रहा है मेरा लूप वैल्यूज के साथ डील करे, अगर कुछ वैल्यूज को मेरे को स्किप करना हो, कुछ वैल्यू को बीच में से स्किप करना हो, तो हाउ कैन यू डू दैट. तो बेसिकली वी वांट टू जंप फ्रॉम द लूप इन बिटवीन. सो इस एक केस में ये कि मैं पूरा लूप से बाहर आ जाऊं, एक केस में कि लूप के अंदर ही हम बने रहे बट कुछ स्टेप्स को हम वहां पे स्किप कर दें. सो फॉर दैट पर्पज वी यूज सम जंप स्टेटमेंट. जंप स्टेटमेंट या ट्रांसफर स्टेटमेंट भी बोल देते हैं इनको हम, जंप स्टेटमेंट. एंड इन पाइथन प्रोग्रामिंग वी हैव two jump statement basically. Here we have break and continue. So moment break will be in break को यूज करने के लिए break कीवर्ड यूज करते हैं, continue के लिए continue कीवर्ड यूज करते हैं. So moment break will be encountered in your loop. Moment break will be encountered in your loop. It will come out from that loop. जिस context में break आपका encounter होगा उस context से तुरंत बाहर आ जाएगा, right? और कंटिन्यू के केस में क्या होगा कि जब भी कंटिन्यू एनकाउंटर होगा आपके लूप में, और ऑब्वियसली इनके लिए कंडीशन हम बताएंगे कि व्हेन अ पर्टिकुलर ब्रेक और कंटिन्यू शुड टेक प्लेस. फॉर दैट पर्पस वी विल स्पेसिफाई आवर ओन एक्सप्रेशन, आवर ओन कंडीशन. सो व्हेन कंटिन्यू विल बी एनकाउंटर्ड, व्हाट विल हैपन, द ऑनगोइंग ऑपरेशन विल बी स्किप्ड एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट इटरेशन इफ देयर इज एनी. सो आई विल टेक वन एग्जांपल सो दैट दिस थिंग कैन बी मोर क्लियर टू यू. तो इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं यहाँ पे. तो सी here I'm taking one example of it. तो यहाँ पे क्या है कि here we have I am iterating value from the Python string value. तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इटरेट करेगा और प्रिंट कर रहे हैं हम. लेकिन मैंने थोड़ा सा चेंज किया इस कोड में. यहाँ पे कंडीशन यूज की इफ लेटर इक्वल्स टू h. जो इटरेटिंग वेरिएबल में वैल्यू आ रही है, if that value is matching with the h, it will enter here in this if block and here we have written break. मीन्स जब भी ये कंडीशन आएगी सीधा ही लूप से बाहर आ जाएगा. ब्रेक आ रहा है तो लूप से बाहर. तो सी क्या होगा, सबसे पहले लूप जैसे लूप स्टार्ट होगा इट विल लुक फॉर द कैरेक्टर वैल्यू. सो p, it will take p equals to h, false, come here, current letter p. After that it will go to the y, next value y equals to h, false, come here, current letter y. After that t equals to h, false, come here, current letter t. After that h equals to h, condition true, enter करते ब्रेक मिला, ब्रेक मिलते ही सीधा लूप से बाहर. तो ये आउटपुट होगा आपका. So that will be the output. But in the same example, instead of break, if I am writing continue, अगर मैं यहाँ पे here if I have written continue, इंडेंटेशन का तो ध्यान रखेंगे ही obviously. So instead of this, if I have written continue here, so what will happen? तो ये वैल्यू आएगी p y t तो आ ही जाएंगी क्योंकि कंडीशन फॉल्स है. जैसे ही h आएगा, for h कंडीशन will be true, it will enter continue will be counter. तो continue एनकाउंटर होती है जो ongoing ऑपरेशन है वो स्किप हो जाएगा and it will continue with the next extension within the same
लूप से बाहर नहीं आएगा, बस जो स्टेप चला है एच का उसके लिए स्किप कर दिया पूरा पोर्शन और कंटिन्यू विद द नेक्स्ट। तो ओ पे आएगा, फिर दिखाएगा लेटर इक्वल्स ओ इक्वल्स टू एच, ओ इक्वल्स टू एच, सो कंडीशन फॉल्स, सो इट विल कम करंट लेटर ओ, तो इट विल प्रिंट करंट लेटर ओ, आफ्टर दैट एंड कंडीशन फॉल्स, इट विल कम, इट विल प्रिंट करंट लेटर एन। तो आउटपुट आएगा पी वाई टी ओ एन, एच का नहीं प्रिंट होगा, बस उसको ही स्किप कर देगा। सो दैट विल हैपन इफ यू हैव रिटन कंटिन्यू हियर। ये है आपका ब्रेक और कंटिन्यू में डिफरेंस। बाकी और भी वाइल के थ्रू भी मैंने बताया इसको, फॉर के थ्रू, वाइल के थ्रू भी आप देख सकते हो उसको। कंटिन्यू का भी केस है, अच्छा सेम किया हुआ है यहाँ पे, ब्रेक की जगह कंटिन्यू करेंगे तो ये आउटपुट आएगा। वाइल के थ्रू भी यहाँ पे एक ऑपरेशन बताया गया है। सो हियर इफ यू रिक्वायर दैट कहीं पे मेरे को कोई कंडीशन एनकाउंटर करने पे बाहर आ जाए लूप से या कंटिन्यू करे, स्किप करे बस कुछ स्टेप्स को, यू कैन स्पेसिफाई द कंडीशन अकॉर्डिंगली एंड यू कैन मेक यूज ऑफ दिस ब्रेक एंड कंटिन्यू अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट एक्चुअली। I hope it is clear to you. Yes, sir. Yes, sir. So now next, we will be discussing about nesting. अब आते हैं nesting पे, nested loop. As the name suggests, nested loop means one loop within another loop. तो it may be the case that अब ये जितनी भी चीजें आपने पढ़ी है ना, conditions हैं, looping है, you can combine these things together as per your requirement. मीन्स ऐसा हो सकता है कि कंडीशन के बेसिस पे लूप चल रहा हो या लूप के अंदर आपके कंडीशन हो, उस बेसिस पे आपका ऑपरेशन, सो यू कैन मिक्स दिस टुगेदर। इवन इट इज आल्सो पॉसिबल you can specify one loop within another loop, which is known as nested loop. Mostly we use this nested loop to whenever we want to print the values according to some specific pattern. अगर मेरे को थोड़ा सा रोज एंड कॉलम, मतलब कुछ वैल्यू को हॉरिजॉन्टली और कुछ को वर्टिकली प्रिंट करना है, तो व्हेन वी वांट टू डिस्प्ले in the form of rows and column, in other words we can say, in that case we will be using nested loop. या मैट्रिक्स फॉर्म में भी अगर डिस्प्ले करना है मेरे को तो वहां पे भी nested loop का केस आता है। एक्चुअली nested list it can be on matrix representation. So how this nested loop will be working? So I am going to take that. ऐसा भी हो सकता है for loop के अंदर एक for loop है, for के अंदर while है, while के अंदर for है, while के अंदर while है, so it can be any kind of thing. तो यहाँ पे मैं for loop को as a reference use कर रहा हूँ nested loop के केस के लिए, right? So it may be the case कि syntax कुछ ऐसा हो सकता है कि मैंने कोई for loop यूज किया, या while के साथ भी है, for किया हमने एक loop यूज करे for I in, और कुछ भी यहाँ पे वैल्यू ले ली मैंने, कोई भी वैल्यू जिसके थ्रू हम चल रहे हैं यहाँ पे colon, and when we have entered here, so we have another kind of loop. ये for loop या while loop कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे हमारे पास कुछ और loop है, right? और वहाँ पे डेटा सोर्स कुछ भी हो सकता है, just for the simplicity I am writing for range. तो यहाँ पे वैल्यू कहीं तक भी आप ले सकते हैं, जहाँ पे भी आप लेना चाहें, जहाँ तक लेना चाहें, colon, and after that यहाँ पे अगर ये for loop है इसका one tab यहाँ पे भी यूज आएगा, and you can write down the line of code here. Even we can use, ये भी इसके अंदर भी नेस्टिंग हो सकती है, nesting can be up to any level lines of code that you are writing. तो यहाँ पे अगर देखें, in first look you are getting understanding this. So basically this is nested loop for this outer, this is outer loop nested. Generally हम क्या करते हैं, मैंने बताया कि पैटर्न जब भी मेरे को if I want to display my value according to some specific pattern, we will be using the concept of nested loop. And generally what we do, तो आउटर लूप को हम यूज करते हैं हाउ मेनी टाइम्स वी वांट टू एग्जीक्यूट अवर लूप फॉर वर्टिकल ओरिएंटेशन, कि वर्टिकली कितनी बार करना है, तो आउटर लूप के थ्रू हम उसको मैनेज करते हैं। तो आप कह सकते हैं एक तरीके से रोज, कितने नंबर ऑफ रोज, वर्टिकली कितना जाना है। जैसे अगर एक पैटर्न है मेरा, सपोज अगर एक पैटर्न इस तरह का 1 1 2 1 2 3, तो इससे मैनेज आउटर लूप से मैनेज करते हैं कि वर्टिकली कितनी बार मेरे को लूप को चलाना है। तो अगर आप देखें वर्टिकली हमें 1 2 3 3 बार चलाया, आप ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं को 3 रोज हैं, दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज सेकंड रो, दिस इज थर्ड रो। तो ये तो हम आउटर लूप के थ्रू मैनेज करते हैं। और जब मैं किसी पर्टिकुलर रो पे हूँ, या मतलब किसी पर्टिकुलर वर्टिकल ओरिएंटेशन के किसी स्टेप्स पे हूँ, वहां पे वैल्यू कैसे प्रिंट हो, आई विल मैनेज दोज विद द हेल्प ऑफ दिस नेस्टेड लूप। तो आप कह सकते हैं कॉलम की, यहाँ पे एक कॉलम है, यहाँ पे ये 2 कॉलम हो गए, C1 C2, यहाँ पे 3 कॉलम है। तो अगर हम कॉलम की तरह इनको ट्रीट करें, राइट, कॉलम की तरह ट्रीट करें, तो इट कैन बी लाइक दिस। तो जनरली इस तरह का सिनेरियो होता है जो हम यूज करते हैं। और जब भी हम नेस्टेड लूप पे काम कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली एंट्री तो आपकी आउटर से होगी, लेकिन वंस इट इज इन दिस इनर लूप,
इट विल बी देयर अंटिल लेस इट इज एग्जॉस्टेड। जब तक ये पूरा एग्जॉस्ट नहीं हो जाता वैल्यूज के लिए तब तक ये बना रहेगा। जैसे ही एग्जॉस्ट होगा फिर यहाँ पर पे आएगा, फिर ये जब एग्जॉस्ट होगा तब फिर ये आपका इससे लूप से बाहर होगा। इट्स जस्ट लाइक दैट कि अगर आपको यहाँ पे सीडेक नोएडा में आपको क्लासरूम में आना है तो सबसे पहले क्या करोगे, यू विल एंटर फ्रॉम द मेन गेट ऑफ सीडेक, उसके बाद हो सकता है आप रिसेप्शन पे जाएं, रिसेप्शन के बाद फिर क्लासरूम में आए, और क्लासरूम में आप तब तक बने रहेंगे जब तक क्लास चलती रहेगी, राइट। तो अगर सपोज बीच में ब्रेक है तो उससे बाहर आ गए, क्लास से बाहर आ गए, लेकिन अभी भी आप वहीं पे बने रहे, सीडेक के अंदर ही बने रहे। फिर से टाइम आया, फिर से आपने फिर से ऑपरेशन परफॉर्म, फिर से एक दूसरा क्लास है, फिर से आप एंटर करेंगे, ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, और जब आपकी सारी क्लासेस आपकी खत्म हो जाएंगी, मतलब क्लास का काम खत्म और सारी क्लासेस हो गई हैं, तो फिर आप सीधा सीडेक से बाहर चले जाएंगे, राइट। सो इट्स जस्ट लाइक दैट। So here, so I will take one example so that this scenario can be even more clear to you. तो यहाँ पे मैंने एक example लिया, see in this example what I have done, यहाँ पे अगर देखें मैंने different loop को different color से भी represent किए यहाँ पे। So here if you look at this, so here we have for iterating variable in range 1, यहाँ से वैल्यू ले रहे हैं, और जैसे मैंने इस लूप के अंदर एंटर किया there is another loop, तो यहाँ पे एक और लूप मिला for num2, ये नेस्टेड हो गया इसके लिए, और जैसे मैंने इसके अंदर एंटर किया फिर एक देयर इज अनदर लूप, तो 2 नेस्टेड लेवल है, ये नेस्टेड लूप है इसके लिए, ये नेस्टेड लूप है इसके लिए, राइट। तो यहाँ पे हमने कुछ वैल्यू भी लिखी है, जैसे यहाँ पे रेंज 1 है, रेंज 1 का मतलब 0, रेंज 2 का मतलब 0 1, यहाँ पे रेंज 3 तो 0 1 2। अब यहाँ पे टास्क कैसे परफॉर्म होगा, कैसे एग्जीक्यूशन होता है, सबसे पहले इट विल एंटर फ्रॉम द आउटर वन, तो जब आउटर वन से इसने यहाँ पे एंटर किया सो इट विल एंटर, तो ये 0 वैल्यू लेगा, तो विद दिस num1 0 वैल्यू के साथ ये एंटर करेगा, इस लूप में आ गया। अब यहाँ पे भी इसको वैल्यू मिली, रेंज 2 है, रेंज 2 का मतलब तो ये तो हो गई है एग्जॉस्ट, यहाँ से एक बार यहाँ पे यूज में आ गई ना, तो हम कह सकते हैं ये वैल्यू आ गई यहाँ से, तो एग्जॉस्ट। अब यहाँ पे आ गए, नाउ हियर वी हैव, सो यहाँ से 0 लेगा, 0 वैल्यू को लेगा, num2 में अब चल रही है वैल्यू 0, num2 के अंदर वैल्यू है 0, तो जब हमें यूज में आ गई है तो इसको मैं यहाँ से कर सकता हूँ, ये एग्जॉस्ट हो रही है। और विद दिस num1 वैल्यू 0, num2 0, इट विल एंटर हियर एंड देयर इज अनदर लूप हियर। अब यहाँ पे भी रेंज 3 0 1 2, तो पहले लेगा ये 0, पहले यहाँ पे लेगा वैल्यू 0, num3 की वैल्यू है 0, यहाँ पे ये हो गई है एग्जॉस्ट, यूज में आ गई तो इसको मैं एग्जॉस्ट बोलता हूँ। तो नाउ वी आर प्रिंटिंग, अब num1 के अंदर वैल्यू 0 है, num2 के अंदर 0 है, num3 के 0 है, अब इनके साथ जो भी करना है करो। मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम जस्ट प्रिंटिंग दिस वैल्यूज हैविंग दिस, तो num1 की वैल्यू प्रिंट करें जो कि 0 है, उसके बाद ये कॉन्कैटिनेट करे इससे जस्ट डिस्प्ले के लिए, तो इसलिए ये डिस्प्ले करेगा, उसके बाद num2 की वैल्यू दैट इज 0 और num3 की वैल्यू 0, अभी ये 0 है, तो ये प्रिंट करेगा 0 कोलन 0 कोलन 0, ये तो जस्ट कॉन्कैटिनेट हो रहा है इसके साथ कोमा के थ्रू, ठीक है। तो 0 0 0, अब क्या है, अब 0 एग्जॉस्ट हो गया, फिर से ये इस लूप में आएगा, चेक करेगा इज एनी वैल्यू अवेलेबल, अब ये इस लूप में तब तक बना रहेगा जब तक कि सारी वैल्यू एग्जॉस्ट नहीं हो जाती, तो अब ये चेक करेगा कि कोई वैल्यू अवेलेबल है, यस अवेलेबल है 1, तो अब ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 1, तो अब आउटपुट बन गया 0, num1 की वैल्यू अभी भी 0 ही है, num2 की भी 0 है, 0 0, बट num3 की वैल्यू हो गई है 1। आफ्टर दैट अब ये भी एडजस्ट हो गई 1, अब नेक्स्ट चेक करेगा वैल्यू अवेलेबल है, यस अवेलेबल है 2, इट विल टेक दिस वैल्यू 2 नाउ हियर, अब ये फिर से यहाँ पे एंटर करेगा तो इट विल स्पेसिफाई 0 0 2, यहाँ पे हो गया, तो अब ये भी एग्जॉस्ट हो गई। अब जब ये एग्जॉस्ट हो गई तो अब कोई वैल्यू नहीं है, तो इस लूप से बाहर आएगा, इस लूप से बाहर आएगा, लेकिन num2 में बना रहेगा, यहाँ पे चेक करेगा क्योंकि वैल्यू अवेलेबल है, यस अवेलेबल है 1, तो अब ये 1 को लेगा यहाँ पे, अब num2 की वैल्यू हो गई 1, num1 की अभी 0 ही चल रही है, तो num2 की वैल्यू हो गई 1, 1 के साथ ये फिर से एंटर करेगा, जब ये num1 के साथ आया तो अब ये फिर से इसको फ्रेशली कंसिडर करेगा, क्योंकि अब 1 के लिए फिर से फ्रेश हो गया, और फिर यहाँ पे देखेगा कि वैल्यू अवेलेबल है, तो ऑब्वियसली 0 अवेलेबल है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या बन गई, num1 की वैल्यू है 0, num2 की वैल्यू हो चुकी है 1, और num3 की वैल्यू अभी है 0, तो ये दिखाएगा 0 1, ये दिखाएगा 0 1 0, इसी तरह ये एग्जॉस्ट हो जाएगी। आफ्टर दैट फिर यहाँ पे लेगा 0 1, num2 की वैल्यू 1 है, 0 1 1, ये एग्जॉस्ट हो जाएगी। आफ्टर दैट इट विल चेक वैल्यू अवेलेबल है, यस अवेलेबल है, तो ये 0 हुई, फिर 1 हुई, अब ये 2 हो जाएगी वैल्यू, तो आउटपुट विल बी 0 1 2, क्योंकि num1 की वैल्यू 0 है, num2 की 1 है, यहाँ पे इसकी 2, अब ये सारी वैल्यू एग्जॉस्ट हो गई।
जैसे एग्जॉस्ट हो गई सीधा लूप से बाहर आया, यहाँ पे भी ये वैल्यू एग्जॉस्ट हो चुकी है तो इससे बाहर आया, यहाँ पे भी वैल्यू एग्जॉस्ट हो गया तो सीधा इससे बाहर, तो दैट्स इट, आपका एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा और इट विल गिव यू दिस आउटपुट। तो आउटपुट आपका इस तरह से डिस्प्ले होगा। तो एक पैटर्न सा बना यहाँ पे, तो इस तरह से काम करता है। अब इसका मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। सपोज ये जो हमने केस क्रिएट किया था ना, अगर मेरे को यही प्रिंट करना हो, यही आउटपुट प्रिंट करना हो तो कैसे करेंगे? अगर मेरे को यही आउटपुट प्रिंट करना है, सो हाउ कैन वी प्रिंट दिस? यस, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि आपको ये देखना है कि वर्टिकली कितनी बार चलाना है लूप को मेरे को, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक केयर ऑफ दैट। तो कितनी बार चलाना है यहाँ पे, अगर हम कंसीडर करें कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, या तो वर्टिकली 3 बार चला रहे हैं, या आप इस तरह से भी कंसीडर कर सकते हैं कि 3 रोज हैं। जैसे भी आप कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप कोई भी कन्वेंशन यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। जैसे सपोज हियर आई एम आस्किंग 3 रोज है, R1 सपोज आई एम सेइंग R2, मतलब वर्टिकली 3 बार चल रहा है, 3 बार एग्जीक्यूट हो रहा है, और R3 और यहाँ पे कॉलम की तरह ट्रीट करें अगर हम इसको, तो कॉलम के फॉर्म में भी कैसे आ रहा है कि ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये आपका फर्स्ट कॉलम, आई एम कॉलिंग इट सपोज C1, it is your C2, and call it C2, and this is C3, सो सबसे पहले आउटर लूप में ये ध्यान रखते हैं कितने नंबर ऑफ टाइम वर्टिकल चलाना है, मींस कितनी नंबर ऑफ रोज है, इन अदर वर्ड्स यू कैन से। तो कितने नंबर ऑफ रोज है, कितनी बार चलाना है मेरे को वर्टिकली? 3 बार। तो अकॉर्डिंगली हम यूज करेंगे। तो एक काम करते हैं, इसी में हमें कोड लिखना है, तो और मेरे को ये प्रिंट नहीं कराना, तो फिर से हम जो मैंने पहले टास्क किया था इसको एक रो स्ट्रिंग की तरह कर दो, तो अब ये प्रिंट नहीं होगा। तो सबसे पहले इसी, अगर मेरे को प्रिंट करना है तो वी विल बी राइटिंग फॉर आई, एक इटरेटिंग वेरिएबल इन रेंज, मेरे को 3 बार चलाना है, और पहली वैल्यू फर्स्ट वैल्यू ये भी ध्यान रखना है कहाँ से किस वैल्यू से स्टार्ट करना है एज पर द सिनेरियो। तो ये वैल्यूज है मेरी, पहले 1 है, पहले वाले जो इटरेशन में 1 है, और हर एक एवरी टाइम इट इज 1। तो हम क्या करेंगे, 1 लिख देंगे, और कितनी बार चलाना है, 3 बार चलाना है, तो आई विल राइट 4, क्योंकि लेस देन 1 होता है ना, तो 1 2 3 ये वैल्यू आएंगे, 3 बार चलेगा, 3 वैल्यूज को रिटर्न करेगा यहाँ पे। तो हमने ये ध्यान रखा, वी हैव रिटन एक्सप्रेशन दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स वी वांट टू डू इट वर्टिकली। अब जैसे ही एंटर करेंगे फिर से लूप जे, सपोज एक वेरिएबल ले लिया इन, और यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि अब क्या करेंगे, इनर लूप हम यूज करते हैं टू मैनेज हाउ वी वांट टू डिस्प्ले द वैल्यूज वर्टिकली, कि वर्टिकल। अब R1 पे जब मैं हूं तो इफ यू लुक एट, अब यहाँ पे पैटर्न को अंडरस्टैंड करना है, उसके अकॉर्डिंग कोड जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जब मैं फर्स्ट स्टेप पे हूँ, फर्स्ट वर्टिकल स्टेप पर, जिसको मैं R1 कह रहा हूँ यहाँ पे, इफ R1 वी हैव 1 वैल्यू विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1, इफ व्हेन आई एम ऑन R2 जब सेकंड स्टेप है तो 2 वैल्यूज हैं, राइट, एंड इट इज आल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम 1। R3 पे तो 3 वैल्यूज हैं। इसका मतलब हर एक स्टेप पे कितनी वैल्यू प्रिंट होनी है वर्टिकली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ रोज। अगर नंबर ऑफ रो 1 है तो 1 वैल्यू, नंबर ऑफ रो 2 है तो 2 वैल्यू। तो रो को मेंटेन कर रहे हैं हम यहाँ पे आई के थ्रू, कितनी वैल्यू आ रही है। तो ये जो नेक्स्ट वैल्यू है यहाँ पे कहाँ तक ये वैल्यू प्रिंट करे किसी पर्टिकुलर स्टेप के लिए हॉरिजॉन्टली, इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ रो, और वैल्यू ऑफ रो को मैनेज कर रहे हैं हम आई से यहाँ पे एक तरीके से। तो यहाँ पे हम एक्सप्रेशन लिख सकते हैं कुछ ऐसा, इन अगर रेंज करूँ स्टार्ट तो 1 से ही हो रहा है, लेकिन कहाँ तक जा रहा है ये, अप टू आई तक हम ले रहे हैं, लेकिन एक कम होता है तो इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पे i+1, क्योंकि आई तक जाएगा। तो यहाँ पे हमने बता दी इट शुड गो टू आई फॉर एवरी स्टेप। उसके बाद आई विल प्रिंट, और यहाँ पे सिंपल जे की वैल्यू को मैं प्रिंट करा देता हूँ, राइट, जे की वैल्यू को प्रिंट करा देते हैं। और
प्रिंट कैसे करना है, सेम लाइन में। इसके लिए मैं मेंटेन कर रहा हूं कि इट शुड बी प्रिंटेड इन द सेम लाइन। तो सेम लाइन के लिए क्या करते हैं हम, एंड इक्वल्स टू, और स्पेस देना तो स्पेस भी दे सकते हैं। और लेकिन हम चाहते हैं कि एवरी स्टेप, अब हम ये भी तो चाह रहे हैं यहाँ पे कि जब फर्स्ट स्टेप एग्जॉस्ट हो जाए ये पहला, तो जो कर्सर है मेरा नेक्स्ट लाइन में आए, फिर वहां से चले। इस तरह जब ये एग्जॉस्ट हो जाए फिर कर्सर मेरा नेक्स्ट लाइन में आ जाए यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही मैं लूप से बाहर आता हूँ, इससे इस इनर लूप से बाहर आए बट आउटर में ही है अभी, तो यहाँ पे कर्सर को मेरे को शिफ्ट करना है। और मेरे को पता है अगर मैं सिंपल प्रिंट भी कॉल कर दूं तो प्रिंट बाय डिफॉल्ट मेंटेन करता है /n, मतलब ये आपके कर्सर को बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट लाइन में ले जाता है। तो एक तरीके से यहाँ पे प्रिंट को कॉल करने का पर्पज ये है, बस आई वांट टू मूव माय कर्सर इन द नेक्स्ट लाइन। इसका पर्पज क्या है यहाँ पे, इसका पर्पज सिंपली इतना है कि आई वांट टू शिफ्ट द कर्सर नेक्स्ट लाइन। ये /n यूज करता है, /n जैसे ही आता है आपका कर्सर नेक्स्ट लाइन में चला जाता है। तो सी आई एम एग्जीक्यूटिंग इट, वी आर चेकिंग दिस, सो वैल्यूज आर कमिंग हियर। तो किस तरह से काम हुआ, नाउ सी। तो इसको थोड़ा और अगर हम यहाँ पे एक्सप्लेन करें तो यहाँ पे सी सबसे पहले रेंज 1, तो यहाँ पे वैल्यू होंगी, मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएंगी, रेंज 1 to 4, मतलब 1 2 3। अब ये वैल्यू 1 पहले जाएगी 1 वैल्यू आई में, 1 के साथ जैसे इसने एंटर किया ये एक्सप्रेशन बन गया। एक्सप्रेशन क्या बन गया यहाँ पे, ये एक्सप्रेशन बन गया यहाँ पर रेंज 1, 1 + 1, आई की वैल्यू क्या चल रही है अभी 1 लेके चल रहे हैं हम यहाँ पे आई की वैल्यू के साथ। तो ये एक्सप्रेशन बन गया 1, 1 + 1 दैट इज 2। और रेंज 1 2 क्या होगा, रेंज 1 2 क्या आउटपुट होगा, रेंज 1 2 का क्या रिप्रेजेंट, रेंज 1 2 क्या होगा, इट विल बी 1 ओनली, राइट, एक कम है। तो सिंपली इट विल, एंड वी आर जस्ट प्रिंटिंग, तो ये 1 यहाँ पे इटरेट होगा जे में, वी आर प्रिंटिंग दैट, सो इट विल प्रिंट दैट 1। अभी भी कर्सर मेरा सेम लाइन में बना हुआ है क्योंकि एंड इक्वल्स टू है। तो जैसे ही अब फिर ये चेक करेगा क्या कोई वैल्यू अवेलेबल है, नहीं है, तो सीधा बाहर, इस लूप से बाहर आती से मिला प्रिंट मिलते ही आपका जो कर्सर यहाँ पे था वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। सिंपल, नेक्स्ट लाइन में गया तो ये एग्जॉस्ट हो गया, अब ये यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे 1 तो हो चुकी है एग्जॉस्ट, अब ये लेगा वैल्यू 2, ये चेक करेगा वैल्यू है, यस अवेलेबल 2 है। तो विद आई ये 2 वैल्यू जाएगी आई में, इस आई को 2 के साथ फिर से एंटर करेगा और ये एक्सप्रेशन बन गया 1, 2 + 1 3। तो एक्सप्रेशन बन गया 1 3, और रेंज 1 3 का मतलब 1 2। पहले ये 1 लेगा जे के अंदर, उसको हमने प्रिंट कराया तो इसने प्रिंट कर दिया 1। उसके बाद ये तो एग्जॉस्ट हो गई, उसके बाद चेक करेगा 2, इट विल टेक 2 एंड इट विल प्रिंट दैट वैल्यू इन द सेम लाइन बिकॉज ऑफ दिस एट्रीब्यूट, क्योंकि अभी भी हम इस लूप में है, तो इट विल प्रिंट 2 हियर। आफ्टर दैट ये भी एग्जॉस्ट हो गई, फिर से यहाँ पे चेक करेगा कोई वैल्यू अवेलेबल है, नहीं है, सीधा लूप से बाहर आती, प्रिंट मिला, तो फिर से कर्सर आपका इस लाइन से नेक्स्ट लाइन में चला गया। अब ये यहाँ पे आएगा, ये वैल्यू हो चुकी है एग्जॉस्ट। अब ये 3 को लेगा आई में, उसके साथ एंटर करेगा, अब ये एक्सप्रेशन बन गया 1, 3 + 1 4, दैट इज 1, 4। रेंज 1 4 मीन्स 1 2 3। तो अब ये वैल्यू लेगा, पहले 1 लेगा, फिर ये 2 लेगा क्योंकि 1 एग्जॉस्ट हो जाएगी, उसके बाद ये 2 लेगा, 2 को प्रिंट करेगा सेम लाइन में बिकॉज ऑफ दिस एट्रीब्यूट। उसके बाद फिर से ये भी एग्जॉस्ट होगी मेरी वैल्यू, उसके बाद फिर से यहाँ पे आएगा, इट विल टेक दिस 3, प्रिंट दैट इन द सेम लाइन बिकॉज ऑफ दिस, स्टिल इट इज इन दिस लूप। उसके बाद ये भी एग्जॉस्ट हो गई, ये भी एग्जॉस्ट हो गई, फिर यहाँ पे आएगा, कर्सर यहाँ पे चला गया, यहाँ पे आएगा कोई वैल्यू अवेलेबल है, नहीं, सारी वैल्यू एग्जॉस्ट हो गई, तो दैट्स इट, so it will just print this output, right? So in this way you are getting this output. जिसको भी मैं रोस्टिंग की तरह कर देता हूँ यहाँ पे, just for reference you can make use of it. तो इसके लिए नेस्टेड लूप भाई, ठीक है ना? So in this way nested loop work. तो हमें पैटर्न को समझना है, कितनी बार वर्टिकल चलाना है, फिर किसी पर्टिकुलर स्टेप पे वहाँ पे पैटर्न किस तरह से प्रिंट हो रहा है, वी नीड टू टेक केयर ऑफ इट। सपोज सी, अब अगर मेरे को प्रिंट करना है, देखो यहाँ पे क्लोज कर दिया क्या मैंने, ठीक है, चलो ठीक है। सो हियर अब अगर यहाँ पे मेरे को इसकी जगह स्टार 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 प्रिंट करना होता तो क्या करते, सिंपल, जहाँ पे मैं वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ, वैल्यू प्रिंट ना करके अगर मैं यहाँ पे कर दूं स्टार, ये एक स्ट्रिंग की तरह, तो वैल्यू की जगह स्टार प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि जब भी ये प्रिंटिंग बता रहा हूँ, मैंने बताया जब भी ये स्टेप आए वहाँ पे क्या प्रिंट करना है, वैल्यू नहीं, ये स्टार। तो अगर मैं अब इसको एग्जीक्यूट करूँ तो आउटपुट कुछ इस तरह का बनेगा। सो यू आर गेटिंग दिस आउटपुट। तो लॉजिक यही है, आर यू गेटिंग, पैटर्न तो वही रहेगा,
बस हमने बता दें कि जब प्रिंट हो रहा है वैल्यू की जगह कोई स्पेशल सिंबल प्रिंट कर दिया हमने, कुछ भी जो भी लिया। सो इन दिस वे अभी मैं ये कर देता हूँ फिर से, क्योंकि इनिशियली रेफरेंस के लिए यूज करना चाहें तो हम वही करें। सो इट इज गिविंग दैट, राइट। और रेंज को हम फॉरवर्ड जाना है, बैकवर्ड जाना है, स्टार्ट वैल्यू क्या कहाँ तक जाना है, अकॉर्डिंगली हम इनको मैनिपुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट नेस्टेड लूप। बाकी जब इसे बेस आपको एक्सरसाइज दी जाएगी, जो आज हमने कॉन्सेप्ट लिए हैं, लिस्ट पहले कर चुके हैं, टपल किया है हमने, टपल के बाद हमने कुछ स्ट्रिंग फंक्शंस की बात की, स्प्लिट और जॉइन। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस अबाउट दिस कंट्रोल फ्लो स्ट्रक्चर्स, जिसमें हियर यू हैव फैमिलियर विद ऑल द कंट्रोल फ्लो स्ट्रक्चर्स। कंडीशनल के लिए इफ एल्स स्ट्रक्चर है, और लूपिंग के लिए फॉर लूप और वाइल लूप है। आपने ब्रेक एंड कंटिन्यू का यूज भी देखा इनके साथ, और नेस्टिंग भी हम यूज कर सकते हैं एज पर अवर रिक्वायरमेंट, राइट। एंड देयर इज वन मोर थिंग यहाँ पे ना, देखो बाकी लैंग्वेज में कंडीशनल स्टेटमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए इफ एल्स भी यूज किया जाता है, एंड देयर इज वन मोर स्ट्रक्चर इन अदर लैंग्वेज, स्विच केस। लेकिन पाइथन में स्विच केस नहीं होता, देयर इज नो स्विच केस इन पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है ना। यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग में स्विच केस जैसा कुछ नहीं है। हाँ, पाइथन 3.10 और उसके बाद के जो वर्जन है उसमें उससे मिलता जुलता इन्होंने कुछ इंट्रोड्यूस किया है कम्युनिटी ने, पाइथन कम्युनिटी, दैट इज विच इज नोन एज मैच केस, बट एक्चुअली इट इज नॉट स्विच केस। अगर मैं देखूँ तो स्विच केस जैसा नहीं है, बट वो भी आपको पाइथन 3.10 उसके बाद के वर्जन में मिलेगा। उससे पहले अगर किसी में आप ट्राई करोगे तो वो मैच केस वहाँ पे भी काम नहीं करता। तो जनरली उसका जो रोल है, हम स्विच केस जैसा भी हम अपने इफ एल्स के थ्रू इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं। ऐसा स्विच केस जैसा कुछ नहीं है, स्विच वर्ड है ही नहीं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे टाइप भी कर दूं ना स्विच अपने पाइथन, तो इट विल गिव यू एरर, जैसा कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे दिखा दें ना, स्विच जैसा कुछ है नहीं। सो हियर, so this is about control flow structures। काम करता हूँ मैं इस कोड को, वैसे तो ये फाइल भी आपके साथ जाएगी, लेकिन एक काम करते हैं, इस कोड को भी मैं जो आपके साथ पीपीटी शेयर करेंगे तो उसमें कोड आपको मिल जाएगा। यहाँ पे दो एग्जांपल होगी टेस्टिंग का, ये तो एग्जीक्यूशन फ्लो को समझने को, यहाँ पे उस फ्लो को एक दूसरे तरीके से भी हमने यूज किया। तो जब भी कभी इस तरह के रो कॉलम के फॉर्म में या किसी भी पैटर्न के फॉर्म में वैल्यू को प्रिंट करना है, तो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा? नेस्टेड लूप। वो फॉर लूप भी के साथ भी टेस्टिंग हो सकती है, वाइल के साथ भी हो सकती है। सो हियर दिस इज अबाउट कंट्रोल फ्लो, बाकी ये तो हमने डिफाइन किया। So I think from theoretical point of view, I think this is sufficient and for today. And now in the second half, I'll give you one exercise which will be based on the things that we have covered so far. उससे आपके ये जो concept है, एक real time problem के साथ जब deal करेंगे तो this concept will be more clear. So उसको continue करेंगे next session में, ठीक है? Yes, sir. अभी अगर presently कोई Okay, doubt sir. है तो आप पूछ सकते हैं, या फिर सेकंड अपने 2:30 पे हम अपना सेकंड सेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो अगर डाउट है पूछ सकते हैं, नहीं तो कैन वी क्लोज द सेशन इफ यू डोंट हैव एनी क्वेरी राइट नाउ? Sir, just one question. I don't know, maybe it's in other programming languages. Is there something like do while in Python? No, we don't have that. While loop से ये मैनेज कर रहे होते हैं। Okay. Actually, see, in the beginning I have told you that the philosophy of Python, we should be able to use same thing in multiple ways, ना कि सेम चीज मल्टीपल चीजों को एक ही चीज के लिए यूज करें। Are you getting the point? Yes, sir. तो पाइथन को इन्होंने इस तरीके से बनाया, इसीलिए कंडीशनल स्टेटमेंट में, इन कंडीशनल स्टेटमेंट इन अदर लैंग्वेज वी हैव दिस इफ एल्स एंड वी हैव स्विच केस आल्सो, बट हियर वी हैव ओनली इफ एल्स। हाँ, पाइथन 3.10 उसके बाद में एक मैच केस जैसा इन्होंने कुछ बनाया, बट एक्चुअली इट इज नॉट एग्जैक्टली दैट स्विच केस, क्योंकि उसी से काम हो जाएगा कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए, राइट? सिमिलरली लूपिंग के लिए भी दो लूप रखे इन्होंने, बस फॉर लूप वाइल लूप।
इवन फॉर लूप की भी बात करें ना, इन अदर लैंग्वेज लाइक जावा एंड सी शार्प वी हैव फॉर लूप एंड वी हैव फॉर ईच। तो उन्होंने क्या किया कि उस जैसा फॉर ना लेके फॉर ईच का ही वेरिएशन फॉर लूप की तरह यूज किया है यहाँ पे। तो उन दोनों का भी एक वेरिएशन लिया। इसी तरह से वहां पे बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, while, do until, right? There are so many variation of these, but यहाँ पे इन्होंने बस एक ही सिंपल लगा आपको for और while, that's it. ठीक है? Yes, sir. Thank you. Sir, अच्छा, I have a doubt. हाँ, yes, tell me. सर जैसे सी में गो टू फंक्शन होता है ना, जिसमें हम स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट जंप कर सकते हैं, पाइथन में भी ऐसा कुछ है क्या? पाइथन में एक्चुअली वैसे तो जो गो टू स्टेटमेंट है ना, इट इज नॉट रिकमेंडेड, इवन दो जिस लैंग्वेज में आप यूज कर रहे हैं ना, वी मेक यूज ऑफ गो टू इन दिस, आपका सी भी है, सी प्लस प्लस, और हम सी शार्प वगैरह में भी इसको यूज करते हैं, बट इवन इन दोज लैंग्वेजेस आल्सो दिस गो टू इज नॉट प्रेफर्ड। एक तरीका जरूर होता है, गो टू की जगह हमें क्या यूज करेंगे हम, गो टू का पर्पज होता है यू विद द हेल्प ऑफ गो टू यू कैन मूव ऑन, यू कैन शिफ्ट फ्रॉम वन सेक्शन ऑफ कोड टू अनदर सेक्शन, राइट? किसी भी सेक्शन पे गो टू के लिए रिटर्न यूज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, जनरली इन रियल टाइम वी डोंट प्रेफर दिस गो टू, बहुत प्रॉब्लम होती है, उसकी जगह हम यूज करते हैं अपनी लूपिंग, फॉर लूप या वाइल लूप। तो फॉर या वाइल के थ्रू हम बताएंगे कौन से मेरे को अगर किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे जाना है, जैसे यस नो करके करते हैं ना, इफ यस नो और मूव ऑन कर जाते हैं फिर से सेक्शन पे, या फिर बाहर हो जाए, एग्जिट हो जाए, या कंटिन्यू करें ऑपरेशन को चॉइसेस के बेस पे, तो उसके लिए हम गो टू जैसा नहीं करते पाइथन में यूज, वी आर यूजिंग लूपिंग फॉर दैट। इवन इन अदर लैंग्वेजेस आल्सो वेयर इट इज अवेलेबल, वहां पे भी प्रेफर नहीं होता प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग में गो टू, एक कॉन्सेप्ट की तरह जरूर है, लेकिन वहां पे भी हम अगर मेरे को एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पे मूव ऑन करना है, रिपीटेशन के फॉर्म में भी करना है, तो लूपिंग प्रेफर की जाती है। आर यू गेटिंग? यस सर, यस सर। ठीक है, ठीक है। यस, यू कैन आस्क इफ यू हैव एनी अदर डाउट आल्सो। ओके, सो अभी अगर डाउट नहीं आ रहा है मन में, तो कैन वी क्लोज द सेशन? यस सर। ठीक है, सो सेकंड सेशन विल बी योर लैब सेशन, और जब उस पर काम करेंगे जो भी डाउट्स हमारे अराइज होंगे related to our theoretical session and this lab exercise, we will be discussing in that session. So here I am closing this session, and we will meet again 8 to 30 in second session. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर।